shift our focus to another story that we're tracking very closely. Shashi Tharoor of the Congress Party, his remarks on Vande Mataram, they've also reignited a fresh political firestorm. The Congress Party and the MP has questioned the need to play the full version of Vande Mataram at the beginning and at the end of the official functions, describing the practice as an unnecessary imposition. While Tharoor has maintained that Vande Mataram is India's national song and deserves respect, he also argued that making people listen to all the verses at the start and end of the event is very difficult to justify. He said that most people are familiar only with the opening lines and that there is no law that has been passed by the Parliament of India mandating the full rendition as far as Vande Mataram is concerned. Look, I honestly think this is an unnecessary imposition by the central government of having to listen to all 5 verses every time. Vande Mataram is the national song. We've all stood up in respect, and the first verse, as you know, and first couple of verses, everyone by now knows it by heart. We stand, we listen to it every time. It used to be sung once at the beginning of an event, national anthem also, and possibly national anthem at the end. Now they want the whole 5 verses at the beginning of every event and at the end of every event. Now the Chief Minister has taken the view that this is optional and that Kerala has chosen to exercise the option not to have the full thing. Well, the controversy erupted in Kerala after Governor there objected to only the first 2 para of Vande Mataram being played before and after his policy address in the State Assembly recently. The Governor maintained that directives from Lok Bhavan and the Union Home Ministry, they called for the full rendition of the national song at such the official, occasions. However, the Kerala government has pushed back. The new Kerala Chief Minister, V.D. Satheesan, has argued that no law has been passed by the Parliament of India that makes the complete recital mandatory, insisting that the issue is one of the, convention rather than a legal obligation. So that is how the war of words had started. While on one hand, we have the Kerala governor who has objected to only the first 2 paragraphs of Vande Mataram being played before and after his policy address in the State Assembly quite recently. We have a counter coming in from the Kerala Chief Minister. He said that there's no law that has been passed by the Parliament of India that mandates the imposition of all the paras to be sung at the official events. Listen in. कांग्रेस कम्युनिस्ट लोग तो शुरू से वंदे मातरम के खिलाफ थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कोशिश करके वंदे मातरम का जो डिसेक्शन था उसको रोक नहीं पाया था। तो कांग्रेस तो वंदे मातरम का खिलाफ है, कम्युनिस्ट आनंद मठ का खिलाफ है, तो उसको लेकर ये लोग बोले गए तो स्वाभाविक है। कांग्रेस का पास जो परिभाषा है सेकुलरिज्म का वो तो दूसरा है। उसका नेता जो है आपका आज शशि थरूर बोल रहे, किसी जमाने में आपका आयर बोलता था, मणिशंकर आयर। कांग्रेस ने अपने आप को पूरी तरीके से मुस्लिम लीग के सामने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल IUML के हाथ में है। The Congress will never have problem with raising or supporting the lobby which speaks about tukde tukde, but the Congress will always have a problem of singing the entire Vande Mataram because it is about venerating and respecting motherland भारत। कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर इस हद तक नीचे जा चुकी है कि अब भारत माता और भारत माता को सेलिब्रेट करने की का एसेंस जो वंदे मातरम में है उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। शशि थरूर जी ने फिर से कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को उजागर किया है, कैसे वंदे मातरम का भी विरोध करते हैं। कहते हैं कि पूरा वंदे मातरम प्ले करना ये अननेसेसरी इम्पोजिशन है। सोचिए, और कहते 5 स्टैंजा बार बार कैसे सुन सकते हैं। सर पहले तो 5 नहीं 6 स्टैंजा है, पर सवाल ये है कि नेहरू जी ने ओरिजिनल वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा जिन्ना के प्रेशर में, और आज कांग्रेस मुस्लिम लीग के प्रेशर में इसका विरोध कर रही है। दोनों हूबहू सेम ही है। कांग्रेस के दूसरे विधायकों ने और नेताओं ने 2 स्टैंजा थे तब भी उसका विरोध किया, सिर्फ पूरे वंदे मातरम का नहीं 2 स्टैंजा का भी विरोध किया। ये तुष्टीकरण की नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, ये सभी लोग मिलकर वंदे मातरम का विरोध करते हैं क्योंकि ये हमास को प्लेटफॉर्म देंगे। And now moving on